topic, but still very crucial. Article 275 deals with what are called as grants. Now, when I'm saying grants, so grants are usually broadly divided into two types of grants. That is statutory grants and grants in aid. Now, statutory grants kya hai? Statutory grants are, these are given by the Parliament out of the Consolidated Fund of India. Parliament आ गया तो यूनियन आ गया, Consolidated Fund of India तुमने बोला ये पावर ऑफ मनी है, right? To such states which are in need of assistance. इसका मतलब ये है कि there is a need based money given. अब नीड कैसे पता चलेगा? नीड बेसिस पता चलेगा with regards to various commissions. बहुत सारी रिपोर्ट्स आएगी. Okay, there will be now अब नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता चला that certain things are not being done. इसको ऑटोमेटिक मतलब है कि सबको सेम बराबर नहीं दिया जाएगा. Yes. So different states may be granted different sums. अब तुम समझ रहे हो, अब जब तुम इंटेलिजेंट लोग हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला फॉर दिस. और कौन दे रहा है? यूनियन दे रहा है. तो डू यू रियलाइज देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन हियर? ओके, दैट दोज हु स्टेट्स व्हिच आर गेटिंग फंड्स आर दोज व्हिच आर politically, principally closer to the union government. Is that a possibility? Yes, it may be a possibility. In other words, कहीं ना कहीं states बड़े major secondary level पे आ जाते हैं in comparison to the union with regards to statutory grants. But hold on, अभी तो story पूरी नहीं हुई है. Specific grants can also be given. ये question आ जाता है, my friends, याद रखना. Article 275 also includes